दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। अब हमारा प्रयास रहेगा कि फिर से आपसे यहीं मिले और हमेशा मिलते रहें, और प्रयास यही रहेगा कि अब जो है आपसे मिलते रहें। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की, क्योंकि राहुल गांधी को जो है कांग्रेस पार्टी के लोग हों चाहे विपक्षी पार्टी के जो लोग हैं, उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं, प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं कि यदि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं रहते हैं और यदि विपक्ष से किसी को चुनने का अवसर मिलता है तो राहुल गांधी को वो लोग देखना चाहते हैं। लेकिन जो कोई भी प्रधानमंत्री बनना चाहता है उसके लिए ये महत्वपूर्ण है कि उसकी सोच कैसी है, किन किन विषयों पर उसकी पकड़ है, क्या नहीं है। तो चूंकि राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं तो देश भर के लोगों से मिलते हुए वो जा रहे हैं, चाहे मणिपुर से होते हुए बिहार, उत्तर प्रदेश। तो इसी सिलसिले में उन्होंने कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ आईटी एक्सपर्ट से, आईटी के लोगों से बात की, जिसमें उन लोगों ने राहुल गांधी से एआई के विषय में प्रश्न पूछा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो होता है जैसे कि जो चीज़ें केवल मनुष्य कर सकते थे वो आजकल एआई के माध्यम से हो सकती है। जैसे सोचने समझने की शक्ति जो है मनुष्यों में होती है, कोई डिसीजन जो है मशीन्स या रोबोट नहीं ले सकते हैं, वो डिसीजन जो है मनुष्य ही लेते हैं। लेकिन आजकल एआई ऐसे हो गए हैं कि वो डिसीजन भी ले रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, और कि वो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उसी के विषय में जब राहुल गांधी से पूछा गया तो वो जो है पूरे टॉपिक को उस टॉपिक से हट के किसी दूसरे विषय पर बात करने लगे। वहीं दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो तमिलनाडु में अध्यक्ष हैं के अन्नामलाई, वो जब आईआईटी मद्रास में गए थे तो उनसे जब वहाँ के विद्यार्थियों ने एआई के विषय में पूछा तो उन्होंने बड़े आसानी से, बहुत ही अच्छे से उसका उत्तर दिया। उत्तर तो खैर राहुल गांधी को भी नहीं पता था और ना ही के अन्नामलाई को अधिक से पता था, क्योंकि ये थोड़ा एक टेक्निकल मामला हो जाता है। लेकिन अन्नामलाई ने बहुत ही अच्छे से उसका जवाब देने का प्रयास किया और जवाब दिया। लेकिन राहुल गांधी ऐसा दिखा रहे थे कि वो एक्सपर्ट है, लेकिन वो कुछ भी सही से उत्तर नहीं दे पा रहे थे। एआई यदि आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि जैसे अभी कुछ समय पहले एक रश्मिका मंदाना का एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, उसे डीप फेक करके बनाया गया था। मतलब वो कोई और महिला थी, उस पर रश्मिका मंदाना की फ़ोटो लगा के वो लगा कि रश्मिका मंदाना है, या जो ऐश्वर्या राय की कई लोग फ़ोटो लगा के, जो इंस्टाग्राम पे जो कुछ लड़कियां नाचती हैं लगता है कि ऐश्वर्या राय है। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से होता है। या नरेंद्र मोदी जी अभी जब बनारस में पिछले वर्ष आए थे दिसंबर के महीने में, काशी तमिल संगमम यहाँ पर हो रहा था। अब मोदी जी को जो है तमिल भाषा आती नहीं है और हिंदी जो है तमिलनाडु के लोग समझते नहीं हैं, तो उनसे संवाद करने के लिए नरेंद्र मोदी ने एक एआई टूल का उपयोग किया था जिसका नाम था भाषिनी। मतलब मोदी जी हिंदी में बोल रहे थे और जो तमिलनाडु के लोग हैं, जिन लोगों ने भी वो ऐप खोल रखा था और ईयरफोन लगा रखे थे, मोदी जी यहाँ हिंदी में बोल रहे हैं और उन्हें तमिल में सुनाई दे रहा था। मतलब वो उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वहाँ पे यूज़ किया। तो इस तरह की चीज़ें, जो टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उसमें आ रही हैं। जैसे अभी कर्नाटक में जो है एक जो चुनाव हुए थे राज्यसभा के, वहाँ पे जीत के बाद कांग्रेस के कुछ प्रत्याशियों ने जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, लेकिन सुप्रिया सिनेत और जो उनके आईटी सेल के लोग हैं वो कह रहे थे कि पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं, नासिर साहब जिंदाबाद के नारे लगाए। तो वहाँ पे एआई के माध्यम से इस तरह की चीज़ें की जा सकती हैं कि जो व्यक्ति वहाँ पे है ही नहीं या जो उसने बोला ही नहीं, उसकी आवाज़ को कॉपी करके ऐसा दिखाया जा सकता है कि उसने ही बोला है। मतलब इसका एक दुरुपयोग भी हो सकता है। तो एक आपको उदाहरण में दिखा दूँ कि किस प्रकार से सुप्रिया सिनेत जो है, उनका क्या कहना था इस पूरे मामले पर, कैसे ये लोग एआई का उपयोग कितना यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सुप्रिया सिनेत का ये जो है वीडियो देखिए क्या वो कह रही हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जो लगे थे उसके विषय में। तो हम इसको सुप्रिया सिनेत इसमें यह कह रही है कि नासिर साहब जिंदाबाद कहा जा रहा है, जो कि कहा भी जा रहा है, लेकिन उन्होंने पूरा वीडियो यहाँ पे नहीं डाला है। उसके बाद आप जो इसका पूरा वीडियो देखेंगे तो एक यूज़र ने ही इनकी पोल खोली है।
नासिर साहब जिंदाबाद और एक बार पाकिस्तान जिंदाबाद। तो चूंकि अब ये क्लियर हो गया, लेकिन एआई के माध्यम से इस तरह की चीज़ें की जा सकती हैं कि किसी को पता ही ना चले क्या बोला जा रहा है। अब हम आपको राहुल गांधी का वो स्पीच सुनाएंगे जिसमें उन लोगों ने, आईटी के लोगों ने उनसे पूछा एआई के बारे में, लेकिन राहुल गांधी जो है इराक में चले गए, सद्दाम हुसैन के पास पहुंच गए। तो एक बार वो आप सुन लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि राहुल गांधी ने क्या कहा था उस पूरे वीडियो पे। Follow-up question on what Vikram added. I think we are seeing a lot of amazing Gen AI tools coming up like ChatGPT and other, and all of these are coming from Western countries. Like India hardly has any big tools. Like two big reasons: we lack a right framework, and we also lack right talent pool. And this will widen the gap of urban versus rural in India. So I think that's another area we would like to hear your views. Whatever AI you're generating, producing. यहाँ पे इस लड़के ने ये पूछा है कि जितने भी एआई के टूल्स आ रहे हैं, चाहे वो चैट जीपीटी हो या कुछ भी हो, विदेशों से ही आ रहे हैं, तो हम क्यों पीछे छूट रहे हैं और क्या हमारे लिए उपयोगिता हो सकती है, क्या यहाँ पे उस तरह की चीज़ें पूछ रहा कि पीछे हम क्यों छूट रहे हैं। तो राहुल गांधी क्या कहते हैं वो आप सुन लीजिए। Sits on top of other networks. So AI is applied on top of a network. AI can be applied on top of a production network. You can apply AI in a factory. You can apply AI on a consumption network. So, people are consuming something, you're distributing something, you can apply AI on that. So, AI sits on top of a network, right? I'll tell you a very interesting story to demonstrate the power of. इन्होंने बोला कि जो भी चीज़ें हम करते हैं एआई उसके टॉप पे है, कुछ भी है वो, मतलब क्लियर अभी आंसर नहीं दिया। अब एक उदाहरण ये देंगे इराक का। This thing. It's not directly related to AI. The United States attacks Iraq. Okay? Within 25 days, it is wiped out the entire Iraqi military. And then 6 months later, something happened. And suddenly, US soldiers were dying every day. And within a 6-month period, the US Army lost about 1,000 armored vehicles. So how did a country or a system that couldn't take on the United States at all and failed to take them on, suddenly 6 months later, literally broke their back? What happened? Saddam Hussein came from a tribe called the Tikriti tribe. This tribe was the center of the Iraqi regime. When Saddam Hussein realized that America aa raha hai, he told all his Tikriti guys, bhaiya, tum log bhago. What did he do? He basically took 155mm shells. You know what they are? Artillery shells. And he distributed them to all these guys. And he said, gaon mein inko le jao. And these guys took these artillery shells and they dug them in the ground. That's all. So what I'm trying to tell you, the Tikriti network came together, cell phone network came together, and the explosive shells came together. 3 networks that were disconnected came together. And they literally obliterated the superpower in Iraq. So the game is about bringing unconnected networks together. Now, what is the biggest problem in India? Our biggest networks are not connected at all. So you guys are a tiny network. You're 1% of the country. Very small network. You're not connected to anything else. I mean, if you really want to bring India's power to bear, then you have to think about these things. Networks are energy, right? The moment you bring them together, it doesn't become 1 + 1 + 1. It becomes exponential. Blam, it just goes. If you use that framework, you can see that that's a very powerful. अभी तक राहुल गांधी ने इसमें एआई के विषय में कुछ नहीं कहा है। वो कहें कि अमेरिका ने जब इराक पर हमला किया था तो कुछ ही समय में अमेरिका ने इराक की सेना को हरा दिया था, लेकिन उसके बाद जो है सद्दाम हुसैन, जो कि टिकरित एक ट्राइब से आते थे, किसी एक ट्राइब की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ लोगों को इकट्ठा करके वो कुछ आर्टी सेल्स वगैरह दिए, जो कुछ मतलब कि मिसाइल वगैरह और जो मतलब गोलियों से संबंधित है, जैसे कि हथियारों से संबंधित है। उसके बाद इनका नेटवर्क आया, सेल फोन्स का नेटवर्क, और ये सब मिलके इस तरह मतलब नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं। एआई के बारे में अभी तक राहुल गांधी ने एक भी शब्द इस पर नहीं बोला है कि एआई का क्या यूज़ है इसमें। नेटवर्किंग की बात करें कि ये वाला सेल फोन का नेटवर्क, ये जो असलहाधारी थे उनका नेटवर्क और किसी का नेटवर्क, वो आके जो उन्होंने अमेरिका को हराया या फिर हजारों अमेरिकी सैनिकों को मारा। लेकिन एआई की बात अभी तक इसमें नहीं है। अभी आगे देखिए कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं। Framework in politics. It's a very powerful framework in business. समाजवादी पार्टी नेटवर्क joined with Congress. अब पार्टी के नेटवर्क की बात करेंगे, समाजवादी पार्टी का नेटवर्क जो है कांग्रेस पार्टी के नेटवर्क से मिल गया तो बड़ा स्ट्रांग हो गया।
तो ये तो नेटवर्क की बात है ना कि जहाँ भी नेटवर्क मिलेंगे तो उससे अच्छा ही उसका परिणाम आता है। 1+1+1 बोल रहे हैं कि 2 नहीं होता, एक्सपोनेंशियल होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन एआई का यूज़ अभी तक इन्होंने इसमें कुछ भी नहीं बताया। Earlier that network was like this, now the network is suddenly lined up together. Now, the problem is in India, business, Samajwadi Party network जयराम रमेश भी हंस joined with Congress network. Earlier that network was like this, now the network is ये देखिए जो इनकी हंसी है जयराम रमेश की या महिला की, मतलब इनको भी अरे क्या कुछ भी कहे जा रहे हैं राहुल गांधी, ये आप समझ। suddenly lined up together. Now, the problem is in India is that pretty much all the conversations that we're having of development, etc., exclude 90% of our population. Meaning the really powerful network is sitting outside. So what is the role of technology and IT is to apply your understanding and knowledge on those networks. But right now what the game is taking place is you're in 1% or not able to apply the stuff in the large 90% of India. And then these networks are not only physical networks, right? So there are caste networks in India. There are business networks in India. There are agricultural networks in India. So that to me is an interesting way to think about it. Vision of 80s which has caused this. अब इसमें कास्ट नेटवर्क की बात कर लिया और भी कई सारे नेटवर्क की बात कर लिया, लेकिन एआई का इसमें क्या यूज़ है वो इन्होंने अभी तक बिल्कुल नहीं बताया। अब दूसरी तरफ यदि आप देखेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु में अध्यक्ष हैं के अन्नामलाई, उनका जब आप रिस्पांस देखेंगे, जब आईआईटी मद्रास में गए थे तो वो किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करते हैं इस मामले को लेके, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। मतलब सुनने में आपको जो है समझ में आएगा कि कितना अच्छा और कितने अच्छे से चीज़ों को उनकी कितनी समझ है। और समझ उनकी इसलिए भी है क्योंकि वो आईपीएस रह चुके हैं, एसपी रह चुके हैं, और उन्होंने अपनी आईपीएस की नौकरी छोड़ के राजनीति ज्वाइन की, और अब जो है तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, और वो भी जो है यात्रा निकाल रहे हैं, जो जिस प्रकार से राहुल भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं उसी प्रकार से वो भी तमिलनाडु में यात्रा कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छा उनको समर्थन मिल रहा है। और जिस प्रकार का उन्हें समर्थन मिल रहा है, लोग यह भी कह रहे हैं कि तमिलनाडु में जो है बीजेपी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेगी लोकसभा चुनाव में भी और अगले विधानसभा चुनाव में के अन्नामलाई के। अब उनका आप एक बार रिस्पांस सुनिए कि वो किस प्रकार से इस विषय में बात करें, वो कितने अच्छे से उन्होंने इस बात का जवाब दिया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये के अन्नामलाई आ गए। अब इनकी बातें आप सुनिए। Adding to Asha's question and what you have mentioned, how do you perceive the role of AI in shaping the mindset of masses, especially in social and political context? Do you see AI as a boon or a bane? And how do you see the role of AI in governance and position of government as a stakeholder in generative AI? Before coming into the campus, I was sitting outside in a coffee shop. I was having coffee. There was a startup guy sitting there, busy with his laptop. He looked at me, I looked at him, both at time. I said, who are you? He said, sir, I'm some startup guy. He asked me, who are you? I said, I'm doing politics here. Within 30 minutes, let us discuss. I said, which field you are? And he said, I'm in the people hiring field. I said, it's going okay? He said, no, sir, AI has disrupted everything, sir. Now all resumes are fake, sir. People write all beautiful things, and we are taking so much time to realize what is right and what is wrong. All statement of purpose, very fancy ones they write. It looks so believable, very emotional. And it just happened to me 30 minutes before, outside your campus, in the road across in the coffee shop. So 100% it is going to disrupt it. Massive disruption is on. And let me go one step further. For a country like us, which is just getting into that orbit of high growth, because your second part of the question is about how the country AI disruption. And we are just warming up to get into that orbit of $10,000 per capita income. We are about $5,000 now. And we have an ambition to reach there. Now I'm going to read out the statistics for you. Since you are Max guys, I prepared something in my computer and came. And what is India's GDP now? So we are about 3.8 trillion, give or take little bit million here and there, 3.8 trillion. So China's GDP is about 17.9 trillion today. I hope it is a true figure from China, because nobody knows what is the true figure. $17.9 trillion. And the Americans are somewhere around $37.8 trillion today. Americans are at 37.8. I'm getting the acknowledgement from the professor, which means my numbers are right. 3.8, 17 and 37 is the number we are looking.
I was just calculating, when I go to IIT campus, these guys are going to make my country, our country, the developed country by 2047, correct? That is our goal. So I was thinking, how will you guys do it? So I did a simple mathematics calculation. If India is growing 13.5% from today, remember, no country has grown 13.5% for more than 2 years. If India is growing 13.5% today, for the next 25 years, compounded annual growth rate, CAGR, F30.5, next year 13.5, 13.5. America is growing at 4% from today. 4%, 25 years. In 2047, we and US are equal. So you have to grow 13.5% every year. Americans have to grow at 4.5% every year. So that 2047, both sit at the same table and say, hello boss, both our economies are same. If we are growing at 13.5% today, for the next 2042 is what? 2024, 18 years? Yeah, 18 years. Next 18 years, you are growing at 13.5%, 18 years, top. China is growing 4% next 18 years, top. Then you will say, hello boss, we are equal. Now, look at the challenge. Can you grow at 13.5%? Because 2047, we have kept a target of $38 trillion now. From 3.8, we have to reach 38 trillion. Traditional ways of business is 100% not going to give you 13.5. Max 7 right now. Do well with a good prime minister, good policy, 8.5. Country aligns in the political sphere. All state governments wants to be in the business mode and less politics and more governance. All states in India, maybe 9.5. Then more IITs churning out intelligent guys like you. You're not going to US, I'm assuming. You all stay in our country and you all stay in our country for the next 25 years. Do everything. 10.5. Correct? And China problem solved, Pakistan problem solved, everything solved. And there is no nuisance, political nuisance like me. Everybody is sober and everybody is good. 11.5. Correct? We are talking of 13.5. 2047 equal. So now you're talking of artificial intelligence disruption, 3D technology, traditional manufacturing practices going for a toss. Americans are telling no more buying from China. Next president, you have to manufacture in US. यहाँ पे देखिए आप ये किस प्रकार से के अन्नामलाई कह रहे हैं कि यदि भारत को 13.5 का ग्रोथ रेट चाहिए तो हम जो भी ट्रेडिशनल काम कर रहे हैं उसके माध्यम से नहीं हो सकता है। और 13.5 का हमें ग्रोथ रेट जीडीपी इसलिए चाहिए क्योंकि यदि हमें अमेरिका तक पहुंचना है या चाइना तक पहुंचना है तो हमें 13.5 का जो है जीडीपी चाहिए अगले 18 वर्षों के लिए, और वो ट्रेडिशनली नहीं होगा। उसके लिए हमें 3D टेक्नोलॉजी चाहिए, एआई चाहिए। ये मतलब सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो कहीं इधर या उधर नहीं भटका रहे हैं कि इराक की सेना ने अमेरिका को हरा दिया, नेटवर्क एक हो गए तो नेटवर्कों के माध्यम से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का नेटवर्क मिल गया, तो वेयर इज़ दैट एआई? उनके टॉक में एआई था ही नहीं। लेकिन यहाँ पे तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष हैं, किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी नहीं हैं, प्रधानमंत्री भी नहीं हैं, तब इनकी समझ इतनी अधिक है एआई को लेके। और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी, जिसे प्रधानमंत्री के रूप में विपक्षी पार्टी के लोग देखते हैं, और पता नहीं क्या जाके कैम्ब्रिज में उनका भाषण होता है, कभी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उनका भाषण होता है, और अभी जो गए हुए हैं विदेश में कोई सुनने भी नहीं आ रहा, कुछ उनकी वीडियोस भी नहीं आ रही है। एक फ़ोटो आई थी जो कि लग रहा था कि वो उन्होंने खिंचवा रहे हैं, मतलब एक पोज दे के खिंचवाना होता है ना, उस प्रकार से खिंचवा रहे थे। तो अभी क्या करने विदेश में गए भगवान ही जाने। और यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति जो कि बीजेपी का अध्यक्ष है एक राज्य में, तमिलनाडु में, उसकी समझ देख लीजिए। इसीलिए लोग इन्हें प्रधानमंत्री का पोटेंशियल कैंडिडेट भी देखते हैं आने वाले समय में। आगे सुनते हैं, काफ़ी मतलब इंगेजिंग टॉक है इनकी। And you're like, hello boss, you manufacture in US, it will be costly. To hell with it, manufacture in US. If US starts back manufacturing in a big way with the Elon Musk and people of the world, if the Europe starts manufacturing within them and they don't want to get into this cost arbitrage, which China mastered for a long time, so you have to understand that is the world you are entering tomorrow morning. You are entering into the world, the Americans are very clear. You know for a fact, the next presidential elections in US,
First time in America's history after 1776, the whites are going to be a minority. They're going to come down below 50%. So the brown skin and people like me, slightly more browner or black, whatever people call, and they are going to go above 50. Hispanics and Asians and everybody. The traditional whites, the Bible Belts, the Mormons, people inside, the so-called traditional whites, they're going below 50. It is scaring them. And next president election is going to be defined by this thing. Of course, two 83-year-old guys are fighting. So you never know, one guy is walking unsteadily, other guy is like, I still have energy left. It is going to be the oldest presidential election. But it is not going to be defined by who is more fitter among the two. You are 83-year-old, 80, come do a arm wrestling. It is not that. The American electorate are going to say, look, I am scared. My country, first time I am going below 50%. My manufacturing is not there. I am not getting jobs. My per capita income is coming down. If you look at the groups, the Hispanics and the Asians, their per capita income is growing up because they are more hardworking. Maybe I am not hardworking, but I don't want to work hard. Their artificial intelligence is entering. You start to imagine, it is reshaping the global politics. It is reshaping the way people are voting. Countries are going far right in Europe. Far right. You have seen the current Danish Prime Minister speaking in the parliament. Have you seen the speech? His speech about Muslims, his speech about immigration. Did you see? My God, different level. He's speaking that kind of language in a parliament because they are forced to go extreme right. And Palestine and Gaza, what? The day one, the terror attack inside Israel. How much killing? 800, 850? Close to 1,000 people. Innocent people died. People who just want to have a good fun in the evening, a party, they got killed, butchered, massacred. What is the retaliation from Israel? Today's count, 29,700. Netanyahu's peace plan is, he's saying, give me the whole Gaza. I want to see what is happening. Let us have control over it. Just imagine, it is completely disrupting. People are fearful. People are afraid. People think the supply chain is going one side, probably to our hemisphere. And the south is fearing, the north is regaining control. The north is fearing, south is more noisy. The global south, the north. So you're getting into this geopolitical tension, which was never there maybe 100 years before. Even World War II was not worse than this. Because now there is no powerful guy. There is zero powerful guy. Who will put a regulation? Why should I listen to Americans' regulation on AI? Tomorrow if Joe Biden is saying, oh, this is America's regulation on AI, you all have to follow. I'm not going to follow. I'm saying, who are you? No, they say 1950 I was a great superpower. I will say to hell with it. You are no more a superpower. You are declaring superpower. You are no Pax Britannica. You are not no Pax Americana. For 100 years, one global superpower managing the whole world. Look at America. They wanted to manage the whole world. You put one aircraft carrier in South China Sea. You put one closer to the Koreans. You put one in the Middle East. You put a CENTCOM command here. You have a Pacific fleet. You have a blue water navy. Everywhere Americans felt, oh, this is my century. I'm controlling the whole world. Middle East fellow have to listen to me. The Koreans have to listen to me. The Japanese have to listen to me. Now, why will I listen to US? If you look at Jaishankarji's statement, the America is listening to Jaishankarji now. He's going to US and talking a language which we never thought in our lives. We will hear an Indian external affairs minister talking in US like that. So the point I'm trying to tell you is, who is going to regulate AI? And it is completely cross-border. And Europeans don't have a common agreement on how to regulate. Some countries over-regulation, some countries lesser regulation. Americans have a problem. And you can't call the chiefs of big companies to the Congress every time, and the congressmen cannot sit and grovel them. It looks good on TV for their constituents, so you can get some votes. That's the American model of democracy. Look good on C-SPAN. Now what I'm trying to tell you is, I don't have an answer. That is why I'm giving a long answer to you. And what I'm trying to tell you is, there is no answer to it. It is going to disrupt. And that is why we need smart guys like you in politics. Because, how many current politicians understand AI? 543 members in the parliament. Yes, they are very good in the traditional politics. Extremely good. This caste you divide, this caste you put, and you put a candidate from this caste, and you put a
independent candidate from this caste. Sorry, I look this side. Sorry, I'm just going that side. And you put an independent candidate from this caste, he will be the vote cutter, and they will win. Now, unfortunately, fortunately for us, and unfortunately for a lot of people, Modi ji is rewriting the political equation. He's saying, oh, development. And he's talking Vikshit Bharat. He's saying 5 years this and all those. So now the politics have to change. See, people sitting there in Delhi, not understanding technology, AI, deepfake, regulation. Over-regulation is a problem. You never know how to turn on that stove because dosa has to be pakka. It has to be correct thing. You have to just flip it and put it. Now regulation has to do that, right? You put over a thing, dosa will become black. Lesser it's uncooked, stomach pain. So I would only say, better guys should get into positions of power, guys of integrity like you, guys of intelligence like you, and understand 10 years from now how will it happen, 20 years from now what will shape up, how is the global demography changing, how is the geopolitical tension now. So Google is number one now, 10 years from now who will be number one? And you all know the chip, the AI, what is the AI background, what is the background for AI? Powerful chips drive AI, right? People say AI is not some Bhuta or something sitting somewhere in Norway and say, oh, I am AI here, hello, hi. It is not that. It is some powerful chips manufactured in Hong Kong by TSMC, which manufactures 56% of the world's chip. And 60% Taiwan. Or a company situated in Netherlands which manufactures the mission for that chip. $100 million is one mission. And we are looking at nanometer now, sir. NM, we have got to 3 nm now, the chip design. 3 nm is the latest TSMC. I am really fearful. I am not hearing this conversation inside politics. I want to hear this conversation inside politics. I sit in many rooms. I sit in a lot of rooms. I want to hear this conversation. Oh, now it is locked. The company in Netherlands, the sole company in the world, which supplies that mission to TSMC, to NVIDIA, it supplies to Samsung. And they have a monopoly for the next many years to buy only that mission which can write 3 nanometer chip now. And you are seeing there is a guy who is having that monopoly outside and who is going to have that AI monopoly in the next 10 years, 15 years, 20 years. And I fear that we are going to get loose out. And that is why our government talks semiconductor, manufacturing, bring it, chips. And I don't see the language of an MLA or MP who doesn't even understand what is happening. Something happening in Taiwan is going to have a repercussion in IIT Chennai. So sorry for the long answer, but the short and sweet answer is, we need intelligence guys like you with integrity to come into the playing field and don't be a spectator outside. And to see, oh, these guys will regulate, 543 guys in parliament will tell me how to run my startup, let me run my startup like that. No, you have to be there to tell people of your generation, to tell them, hello boss, I am with you. I understand your problem. I am in the political field. Let us try and work out a solution. And we are not here to harm you as a government. And 13.5% growth for 25 years, sir. Is it possible? Unless you disrupt the whole mindset of our country. You got to have highways, you got to have, we have 41 Vande Bharat trains. We have to make it 500. The first bullet train, 2026, it is going to fly. But we need 15 bullet trains. We have 149 airports. We need 300. We got to find inland waterways, movement of goods. You don't disrupt this. I don't think 13.5% is possible. And no, then you might tell me, no, sir, let us do after 2047. Why are you in a hurry? Let us grow only at 9%. Why do you want to come to IIT Chennai and raise our heart pressure to say 13.5%, sir, what is this? You yourself said 7%. When a person like Modi ji comes, 8.5%. When all governments behave like Modi ji, it is 10%. When IIT guys don't go to America, they stay here 11%. You yourself said all those things. Now you are saying 13.5. Brother and sister, we will become old in 2047. Nigerians will come. You know what Nigeria is doing now to the world? They are just warming up. They are no more that third world country sitting in Africa. Democracy is getting stabilizing. And once schools come, colleges come, Nigeria gets a seat in the United Nations table when the UN gets reformed. How can you say the most populous country of Africa, I don't give you a seat in the table, wait outside? How will you say a country of 142 crore people, reforms will come? India will be a permanent member. It's a matter of time. It's geopolitics.
Geopolitics. And reforms have to happen. And you cannot have a country of 142 crore to say, "Alright, boss, you wait outside, your time will come after 25 years." So what I'm trying to say is, we are in for a serious disruption. Politics, economics, geopolitics, the way the supply chain is structured, the way Indian economy is being currently run. So I hope and pray that you guys get into politics. Now you are like, what is that? We called you to give lecture on only economics, only policing, only this thing, and now you are calling us. So unless the politicians become smarter than the people to whom the governance is applied, then there's no way you will progress faster. So I hope and pray that we all together will solve the AI challenge. Now she is wondering, no answer you gave me. You took 15 minutes, you traveled around the globe, you went to CHIP, and now you say you don't have an answer. Thank you for that very long answer, sir. He's already becoming a politician, you see. तो इसमें आपने देखा कि इस प्रकार से अन्नामलाई से जब पूछा गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, तो उन्होंने सेमीकंडक्टर्स की बात करी, चिप्स की बात करी, कौन सी कंपनी जो है सेमीकंडक्टर बनाती है, चिप्स बनाती है, और भारत में क्या क्या हो रहा है, भारत में मोदी जी उसके लिए क्या कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स के लिए, प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चर के लिए, और कैसे डिसरप्टिव है पूरे वर्ल्ड के लिए। तो वो मतलब फोकस्ड रहे, जो उनसे पूछा गया था उसी पे बात किया, और जो इनका नॉलेज इस विषय में देखा गया कि कौन सी कंपनी का मार्केट शेयर इन सेमीकंडक्टर और चिप्स के मामले में 55%, 60% है, ये मतलब एक बहुत अच्छा नॉलेज है। और एक पूरे ग्लोब में घुमाते हुए क्या उसका यूज़ है, क्या उसका डिफ़ॉल्ट मतलब कि डिसएडवांटेजेस हैं, बिल्कुल सही से अपनी बात रखी। अब राहुल गांधी के साथ समस्या ये है कि वो जो चीज़ पकड़ लेते हैं, जो चीज़ पढ़ते हैं, टॉपिक कोई भी आए वो लिख के वही आते हैं। जैसे परीक्षा में कि हमने ये चीज़ें पढ़ ली, कुछ भी पूछ ले हम वही लिख के आ जाएंगे। कुछ दिनों पहले ये जो है ऐश्वर्या राय के बारे में, हर एक रैली में ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन के बारे में बात कर रहे थे। अभी इन्होंने ओबीसी को पकड़ा हुआ है। कुछ समय पहले जब ये पांडव का हो रहा था, मतलब जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो हो सकता है उस समय ये महाभारत पढ़ रहे हों या महाभारत के विषय में कुछ इनसे बातचीत हुई हो, तो कहते कि पांडवों ने डीमोनेटाइजेशन नहीं किया, पांडवों ने ऐसा नहीं किया, तो पांडव को लेके आ रहे थे। और अभी ये जो हो सकता है कि इराक के विषय में, सद्दाम हुसैन के विषय में कुछ पढ़ रहे हों, इनसे पूछा गया एआई के बारे में, सद्दाम हुसैन के बारे में बताने लगे। राहुल गांधी का वो वाला वीडियो देखिए जिसमें ये पांडव के बारे में करे कि पांडव ने जो है डिमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण तो नहीं किया था। सुनिए इनको, मतलब सुनने में जो आनंद है ना। पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया क्या? नोटबंदी की थी क्या? गलत जीएसटी लागू की थी क्या? कभी करते? अब उस समय क्या व्यवस्था थी, मुद्रा की व्यवस्था थी कि ये जो नोटबंदी, नोट चलते थे कि नहीं चलते थे, लेकिन इनको जो है अब महाभारत के विषय में कुछ पढ़ा हो गया तो उसी के बारे में बात करेंगे। उसी प्रकार से सद्दाम हुसैन के बारे में बात कर रहे हैं, एआई के बारे विषय में पूछा जा रहा है और सद्दाम हुसैन के बारे में बात कर रहे हैं। तो कुल मिला के राहुल गांधी का ये है कि वो अपनी ही एक अलग दुनिया में चलते हैं। जो चीज़ वो फिक्स कर लेते हैं कि मुझे इसी विषय में बोलना है, उसी विषय में वो बोलते हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि राहुल गांधी का जो बचपन है वो ठीक से बीता नहीं, ठीक से उनकी शिक्षा दीक्षा नहीं हुई, और जो मानसिक विकास है वो हो नहीं पाए। तो जो उन्हें समझा दिया जाता है कि आप इस विषय में बात करिए, उसी विषय में बात करते हैं। अब ये जो है देश की सबसे बड़ी, विपक्ष में जो सबसे बड़ी पार्टी है भारत में, उसके नेता हैं ये राहुल गांधी। तो इनसे लोगों को बड़ी उम्मीदें होती हैं, और केवल देश में नहीं, विदेश के लोगों को भी उम्मीदें हैं। तो जो लोग मोदी को हटाना चाहते हैं वो राहुल गांधी को ही अपना एक हथियार मान रहे हैं। तो उन्होंने इन्हें सिखा दिया कि ओबीसी के विषय में बात करो, मुसलमान असुरक्षित है उसके विषय में बात करो, ईसाई असुरक्षित है उसके विषय में बात करो, ये नैरेटिव बनाओ। ये कहीं भी जाते हैं तो ओबीसी के विषय में बात करते हैं। कोई पलट के इनसे पूछ ले कि कांग्रेस पार्टी में कितने ओबीसी हैं, आप स्वयं ओबीसी नहीं हैं, आप तो ब्राह्मण कहते हैं, तो आप छोड़िए, किसी और को बनाइए जो मेन लीडर है। आपने दिखाने के लिए तो मल्लिकार्जुन खड़गे को बना रखा है, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग है वो किस ओबीसी के पास में आपने डिसीजन मेकिंग दी हुई है, या कितने प्रधानमंत्री आपने ओबीसी दे दिए हैं? तो कोई पलट के पूछ दे तो जवाब नहीं होगा। तो राहुल गांधी का बचपन देखिए तो वो सही से बीता नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी जो है सोनिया गांधी के विषय में बताते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने भारत को अपना कभी समझा ही नहीं, भागती रही हमेशा ही।
1971 में वो जब बांग्लादेश से युद्ध हो रहा था भारत का, तब वो चली गई थी भारत छोड़ के। फिर 1977 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार जो चली गई, जनता पार्टी की सरकार आई, तो वो इटालियन एम्बेसी में जाके छिप गई थी। 1991 में जब राजीव गांधी की हत्या होती है, तो उन्होंने अपनी सारी ज्वेलरी और जो भी कीमती मूल्यवान चीज़ें थी उनको एक ट्रंक में भर के प्लेन से सिंगापुर भिजवा दिया और वहाँ पे डिपॉजिट करवा दिया था। तो ये सोनिया गांधी की हिस्ट्री, देश को उन्होंने कभी अपना समझा ही नहीं। और राहुल गांधी कभी यहाँ जा रहे थे, कभी वहाँ जा रहे थे, ना उनकी पढ़ाई अच्छे से हुई, ना उनका विकास अच्छे से हुआ। तो ये जो है आज स्थिति राहुल गांधी की देखने को मिल रही है। और इसीलिए राहुल गांधी भरपूर प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी चाह रही है, लेकिन जनता को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी जो है क्यों थोपे जा रहे हैं। मतलब कोई भी क्रेडिबिलिटी इनकी नहीं है। अभी ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उससे पहले इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। तो यात्राओं का एक अपना एक महत्व है। महात्मा गांधी जब स्वतंत्रता से पहले यात्रा करते थे गुजरात के, लेकिन वो बिहार भी पहुंचते थे, बंगाल भी पहुंचते थे। इसीलिए उनकी एक्सेप्टेबिलिटी इतनी थी, पूरे देश की जनता उन्हें स्वीकार करती थी। और भारत में जो है सबसे बड़ा उन्हें नेता उस समय माना गया। जो भी विवाद रहे वो एक अलग विषय है, कौन मान रहा है कौन नहीं मान रहा, लेकिन सबसे बड़े नेता उस समय तो महात्मा गांधी ही थे। सुभाष चंद्र बोस से उनकी जो कुछ कॉन्ट्राडिक्शन थी, लेकिन फिर भी वो महात्मा गांधी को, जो मोहनदास करमचंद गांधी को नेता मानते थे। तो क्योंकि वो यात्राएं करते थे। उसके बाद जो है रथ यात्रा जो है अडवाणी ने निकाली, तो वो बड़े एक नेता बने। उसी तरह आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी ने यात्रा निकाली, तो वो मुख्यमंत्री बने। और अभी प्रशांत किशोर निकाल रहे हैं, अन्नामलाई तमिलनाडु में निकाल रहे हैं। तो आने वाले समय में आप देखेंगे एक बड़ा इम्पैक्ट यात्राओं का होता है। और राहुल गांधी ने जब भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली, तो तमिलनाडु में, कर्नाटक में इनको लाभ हुआ, तेलंगाना में इनको लाभ हुआ। एक अलग विषय कि मध्य प्रदेश में लाभ नहीं हुआ, या राजस्थान या छत्तीसगढ़ में लाभ नहीं हुआ। लेकिन ये कैसे कह सकते हैं कि यदि वो यात्रा नहीं निकालते तो वो मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ जीत ही जाते। हो सकता है वहाँ कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हों कि यात्रा निकाले चाहे ना निकाले, उससे विशेष फर्क नहीं पड़ा। और उसी समय जो है उनके जो एक घटक दल हैं, उदयनिधि स्टालिन डीएमके, वो जिस प्रकार वो सनातन के विरोध में बयानबाजी कर रहे थे, उसका भी नुकसान हो सकता है। लेकिन यात्राओं का लाभ होता है। लेकिन राहुल गांधी जिस प्रकार से यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो वो अभी जो है उसका कोई विशेष लाभ इनको नहीं होने वाला है, क्योंकि चुनाव सिर पे हैं। और इस बीच में ये चले जाते हैं विदेश में, वहाँ पता नहीं किसको सुनाने चले जाते हैं। अभी इन्हें भारत में रहना चाहिए और लोगों से संवाद करना चाहिए, लेकिन उस तरह का संवाद इनका देखने में नहीं आ रहा है। अपनी ही बात कहते हैं, लोगों की सुनते कम हैं। और जो इनकी मेंटल स्टेटस है वो आप देखिए कि किस प्रकार से इनका स्टेटस है। किसी ने पूछा था इनसे प्रश्न वायलेंस नॉन वायलेंस को लेके, क्या स्टेटस था उनका, सुनिए आप। So, how you envision the compact between violence and non-violence in Indian society? I think, I mean, the word that comes to mind is forgiveness, right? It's not precisely the most accurate. It's how to put it? You realize. I'm thinking. You realize, right? No, because you've I didn't mean to stump you, but it's No, you a haven't very stumped me. obvious. It's a very You obvious haven't- question. you haven't stumped me. But no one's asked you. I'm surprised. No, they've asked. Have they? I've not. Then why don't you have the? Because why don't I know I'm the trying answer? to go deeper in the answer. Okay, let's do this. So, how you envision the compact between violence and non-violence in Indian society? उन्होंने केवल इतना पूछा था कि मतलब भारत में वायलेंस नॉन वायलेंस का क्या इम्पैक्ट है, इसी विषय में पूछा था, लेकिन इसमें इतना इन्होंने समय लिया। तो कुल मिला के जो है ये स्थिति है राहुल गांधी की, और इन्हें जो है प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं जो विपक्ष के लोग हैं। ये इनका मेंटल स्टेटस है, मेंटल जो इनकी स्थिति है, स्ट्रेंथ है।
और दूसरी तरफ बीजेपी के जो तमिलनाडु के अध्यक्ष हैं वो तो कुछ पार्टी के मुख्यमंत्री या कुछ अध्यक्ष भी नहीं है, उनका ये है। तो इसे समझ सकते हैं क्या कितना बड़ा चेंज जो है, कितना बड़ा डिफरेंस जो है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में आज के समय में है। एक तरफ मोदी जो है एक ऐसे टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं, एआई भाषणी का, एआई टेक्नोलॉजी का वो यूज़ कर रहे हैं मोदी, और बीजेपी बड़े अच्छे से यूज़ कर रही है। दूसरी तरफ ये राहुल गांधी ये एआई के विषय में पूछा जाता है तो सद्दाम हुसैन के बारे में बात करने लगते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपसे, कल फिर नहीं, आज शाम को ही मिलेंगे, और प्रयास रहेगा कि अब हम आपसे लगातार मिलते रहें। तो आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद, नमस्कार। क्या वार्निंग है? कुछ तो वार्निंग आई है।